Hello friends, welcome to the Pulse Excel. So in this video lecture, I am going to talk about Agarose Electrophoresis concept from analytical chemistry background. So before start with this actually concept or the topic, first of all you need to understand what is the importance of this topic and why we need to study this actually Agarose Electrophoresis. So actually it is a very famous separation method and it is the smallest part of the what your gel electrophoresis that is basically used in biochemistry, molecular biology, genetics and clinical chemistry. So the main purpose that why we have to perform these actually agrogel electrophoresis only reason is that whenever we are going to dealing with the actually mixed population of what your student DNA, RNA and the protein molecules. And when these actually macromolecules we want to separate out. So which technique then you need to use? तो उस टेक्निक को स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बोलते हैं that what is your agrogel electrophoresis technique. So basically agrogel electrophoresis is a powerful separation method frequently used to analyze your DNA fragments which is generated by restriction of enzymes, and it is a convenient analytical method for separating DNA fragments of various sizes ranging from 100 bp to 20 और 25 kb. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली जो हमारे डीएनए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं स्मॉलर देन 100 bp आर मोर इफेक्टिवली सेपरेटेड यूजिंग एक्चुअली दिस काइंड ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. मेन पर्पस यहाँ पर ये है कि जब हम लोग ये सेपरेशन यहाँ पे कैरिड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग द एग्रोजेल, सो दिस एग्रोजेल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड दैट particularly pores acts as a over here the molecular sieve and that actually separates the molecule based on the what student charge साइज एंड द शेप. तो जनरली यहाँ पर हम लोग जो भी मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट आउट करते हैं that entire separation is depending upon the what student charges, size and shape of the molecule. So that is really very important while I am going to discuss about the what student over here what is the agrogel electrophoresis mean. Afterwards understanding this what is actually major purpose and what is the main motive that separation and the purification of molecules, then we'll start with the actually what are the major key points of this agrogel electrophoresis. मतलब जो पूरा electrophoresis है वो कौन से point के ऊपर depend होता है. तो इसमें actually कुछ 7 key points है. With respect to this point you can clearly understand that what is the agrogel electrophoresis means. So the step 1 over you can see the first of all you need to prepare द जेल. तो यहाँ पे सबसे जो मेन स्टेप जो है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो हम लोग यहाँ पे जेल यूज कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, तो वहां पे हमें जेल को सबसे पहले तो बनाना है. सो वी हैव टू प्रिपेयर द एग्रोजेल. स्टेप 2 हमें यहाँ पे बनाना है सैंपल प्रिपेयर करना है. तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला यू कैन टेक द प्रोटीन पीएसआर प्रोडक्ट और द डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल वॉट एवर द यू वांट डिजायर एनालाइट यू नीड टू प्रिपेयर दैट सैंपल. थर्ड पार्ट यहाँ पर ये है दैट सेटिंग अप द इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस. तो जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कास्टिंग ट्रे यहाँ पे यूज करोगे तो उसको प्रॉपरली पावर लीड जो भी आपका होगा चेम्बर उसे आपको फिक्स प्रॉपरली करना है एंड स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट. तो ये आपका हुआ सेटिंग अप द इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस. देन यू हैव टू लोड द जेल, इंट्रोड्यूस द सैंपल इन वेल, देन एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट. उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि चार्ज पार्टिकल कैसे रन हो रहे हैं जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे apply किया, and then lastly analysis of the fragments through the UV detector. So this is what some of the actually major key points of this agrogel electrophoresis. Now you can see the each step one by one कि सारे step यहाँ पे क्यों important है और ये सारे step हमें कैसे perform करने हैं. ठीक है. So let us first start with the step 1 that is the making up of the gel. तो यहाँ पे सबसे जो first point है वो है preparation of the gel. अब जेल मतलब यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं एग्रोज. मैंने पहले आपको नाम बोला तो एग्रोज का सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि एग्रोज इट इज अ वन काइंड ऑफ द पाउडर. सो इट इज अ नेचुरल लीनियर पॉलीमर. ये क्या है आपका एक लीनियर पॉलीमर मटेरियल है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड एंड दैट फॉर्म्स जेल मैट्रिक्स by hydrogen bonding when it is heated with a buffer and allowed to cool.
तो उस सॉल्यूशन को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल, एंड दे आर द एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर मीडियम we can use for the separation of what your large size nucleic acid or the moderate kind of the your macromolecule के separation के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं. So the very first step under this that आप जो भी यहाँ पे जेल प्रिपेयर करते हो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दे आर गोइंग टू वेरी फ्रॉम 0.2 से लेकर के 3% है. तो ये आपके कॉल मतलब जो भी आप जेल बना रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1% एग्रोजेल प्रिपेयर करना है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट. इसके लिए आपको क्या करना है, फिर 1 ग्राम आपको एग्रोस पाउडर प्रिपेयर करना है एंड दैट हैज टू बी डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द TAE सॉल्यूशन. मतलब इस बफर में उसको आपको डिजोल्व करना है. अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे 2% ऑफ द वॉट ईयर जेल प्रिपेयर करना है, तो आपको सिंपली फिर क्या करना होगा, 2 ग्राम ऑफ एग्रोस पाउडर वे करना होगा और उसको 100 ml TA बफर में आपको डिजोल्व करना है. अब टीए बफर का यहाँ पे मतलब हम लोग समझते हैं कि ये बफर यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द बफर. तो बफर का यहाँ पे मेनली रोल है टू मेंटेन द पीएच ऑफ योर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस. अब यहाँ पे आप आइदर यू जस्ट गो विद द टीए बफर और द टीबीई बफर. तो यहाँ पे हम लोग दो बफर यूज कर सकते हैं. सो टीए का मतलब यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कंपोजिशन लाइक योर ट्रीज बेस, एसिटिक एसिड एंड द EDTA. ओके तो ये वो आपका फर्स्ट बफर सॉल्यूशन. और सेकेंड बफर आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एसिटिक एसिड यू कैन पुट द बोरिक एसिड एज वेल. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है TB का मतलब है ट्रिस बेस, बोरिक एसिड एंड द EDTA. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बफर सॉल्यूशन दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर व्हाट सॉल्यूशन मेकिंग ऑफ द जेल. देन थर्ड है कंपोजिशन क्या है हमारे बफर्स के. सो व्हाइल यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर द TB, तो टीबी के लिए यहाँ पे आपको लगेगा 54 ग्राम ऑफ ट्रीज बेस, 27.5 ग्राम ऑफ द बोरिक एसिड, 20 ml 0.5 molar EDTA solution which are having the pH 8, and then just make up the solution. तो ये हुआ आपका TB. एट द सेम वे जब आपको TAE बनाना है तो आपको 40 मिलीमोलर ट्रीज बेस लेना है, 20 मिलीमोलर एसिटिक एसिड बनाना है, 1 मिलीमोलर EDTA बनाना है which are having the pH 8.3. So this is how these are the major buffer composition that you need to use for the preparation of the gel. And the lastly here you can also into the add in the gel like ethidium bromide. तो इसका रोल यहाँ पे ये होता है when it is added to the gel, okay, it is help to visualize what your DNA fragment. So when it is added to the gel, final concentration it is a 0.5 what your microgram milliliter to facilitate the visualization of DNA after the electrophoresis. तो ये हुआ. अब हम लोग through the actually chart you can visualize entire process. So here is the picture. So now you can see over here student very clearly. सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे अगर आप प्रोसेस देखते हो, सो इन दिस प्रोसेस द वेरी फर्स्ट इनिशियली आप लोगों ने यहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने लिया बनाया है, सो यू कैन टेक नाउ TAE बफर और यू कैन यूज TB एनी वन बफर. तो वो बफर एंड डिस्टिल वाटर आपको यहाँ पे फ्लास्क में ऐड करना है. देन इन द सेम फ्लास्क यू नीड टू ऐड द वेइंग एग्रोस पाउडर. सो आइदर यू कैन टेक द 1 ग्राम अगर आपको 1% बनाना है और अगर आपको 2% बनाना है तो टेक द 2 ग्राम ऑफ द एग्रोस पाउडर ट्रांसफर इनटू द फ्लास्क. ठीक है. Now after addition actually all this material, what will be the next step over here, that now this solution has to be completely clear. तो ये एग्रो जो पाउडर है इस पूरे बफर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, उसको प्रॉपरली डिसॉल्व करना है. So now to dissolve this there is a most important tip is that माइक्रोवेव. तो ये हमारा माइक्रोवेव है यहाँ पे. So flask will be very hot, so you have to take proper precaution. तो आपको यहाँ पे ग्लोव्स वेयर करना है, सेफ्टी गॉगल्स भी यूज करना है. So tip is that it is a good idea to microwave for only 30 to 45 seconds. Stop and then swirl and again then continue towards the boiling. Keep an eye on it properly, उसको आपको देखना है. And the solution has tendency to boil over. Immediately remove the flask from the microwave oven. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, in the microwave only for 1 to 3 minutes you have to what
put your solution. So until your entire agarose powder is going to be dissolved into the your buffer solution. और आपको ये चेक करना है कि वो ओवर बॉइल नहीं होना चाहिए solution, because as some of the buffer will evaporate and thus alter the final percentage of what your agarose in the gel. So that is what you have to take care of that whenever you are going to be heat up your solution into the microwave oven. आफ्टर दैट लेट योर एग्रोस सॉल्यूशन, आपको उससे हटाना है माइक्रोवेव से और उसको यहाँ पे कूल करना है. टेक इट टू द रूम टेम्परेचर अबाउट, ये अभी जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री, मतलब जब तक वो 50 डिग्री सेल्सियस नहीं आता तब तक रखो. मतलब कीप योर हैंड ऑन द फ्लास्क अबाउट 5 मिनट्स, उसको कूल होने दो. तब तक आपको क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप जस्ट बी रेडी विथ योर व्हाट, इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus जेल. तो जो इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट कास्टिंग ट्रे. तो ये जो कास्टिंग ट्रे, ये आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सेटअप करना है. सो वंस यू आर गोइंग टू यूज दिस कास्टिंग ट्रे, इन दैट कास्टिंग ट्रे यू जस्ट हैव टू ऐड दी वॉट योर कोम. तो ये आपको यहाँ पे कोम को फिक्स करना है. सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द कोम ओवर हियर स्टूडेंट. सो कोम यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके लिए ऐड करते हैं इसके अंदर, ताकि वहां पे आपके वेल्स जनरेटेड हो. वेल जनरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वहां पे कुछ गैप जनरेट होते हैं एंड इन दैट गैप यू आर जस्ट सपोज टू बी इंट्रोड्यूस योर सैंपल. तो आपको सैंपल इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेस क्रिएट करना होता है. उस प्लेस को यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वेल्स. और वो वेल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कोम्स का हम लोग यहाँ पे जनरली यूज करते हैं. ठीक है. सो वंस यू आर गोइंग टू बी पुट द वेल्स इनटू इट, आपको क्या करना है, ये जो कूल जो आपने जेल बनाया था, ये सॉल्यूशन आपको क्या करना है, ट्रे में पोर करना है. सो आफ्टर पोरिंग द एंटायर जेल इनटू द ट्रे, जस्ट वेट फॉर 50 to 20 मिनट्स सो दैट दिस लिक्विड सॉल्यूशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट. तो ये सॉलिडिफाई होने तक आपको रुकना है. वंस इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन, तो सॉलिडिफाई होने के बाद आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिमूव दिस कोम. तो ये यहाँ पे देखो ऐसे करके ये यहाँ पे वेल्स जनरेट हो जाएंगे इनटू द जेल पार्ट. ओके. सो दिस इज द व्हाट योर फर्स्ट पार्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ द जेल, दैट इज गोइंग टू बी फिनिश. सो आई होप सो यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस पार्ट. Now we'll start with the now second part, that is the once you are going to be prepare the gel. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to prepare the sample. और sample preparation के लिए आपको यहाँ पे क्या लगेगा, the very first which is sample containing DNA. अब यहाँ पे DNA आप ले सकते हो, PCR प्रोडक्ट ले सकते हो, मतलब पॉलीमराइज चेन जो प्रोडक्ट होता है उसके फ्रैगमेंट चेक करने के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो मेथड, या फिर DNA RNA जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल से प्रोटीन से, ठीक है, उनके लिए. तो वो आपको सैंपल लेना है. Then this sample has to be okay mix up with the loading die. अब लोडिंग डाई का यहाँ पे रोल क्या होता है कि मान लीजिए जब आप आपके सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हो जेल में, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है. ओके. इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे चैम्बर में उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, तो वो पोजीशन लोकेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग डाई को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सैंपल, सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज कि आपका सैंपल कहाँ तक रन हुआ है. तो लोडिंग डाई में जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू along with the 0.25% हाइलिन साइनोल एंड 30% ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल का यहाँ पे रोल ये है कि हमारे जो भी ये मार्कर्स होते हैं डीएनए, जो हमारा सैंपल मॉलिक्यूल है, that is exactly a very lightweight. So at that time what will happen, when this sample molecule are introduced into the gel, there may be possibility that आपका जो सैंपल है वो उस एक्चुअली जेल से बाहर आए या फिर उसके ऊपर फ्लोट हो सके. तो वो आपको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि सैंपल को प्रॉपरली उसमें इंसर्ट करना है, सो दैट इट कैन सपोर्ट टू द जेल एंड दे कैन प्रॉपरली रन टूवर्ड्स योर व्हाट करंट. जब आप स्टार्ट करते हो तो उनका प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टू प्रोवाइड द विस्कोसिटी टू योर सैंपल, प्रॉपरली उसका फ्लो होने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्लिसरॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द व्हाट योर सैंपल प्रिपरेशन. So this is all about what your student sample preparation. So once you are going to be prepare the sample, the third step of the what you are this agarose gel electrophoresis, that you can start with the electrophoresis process. अब यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द जेल हैज सॉलिडिफाई, आपने क्या किया था, ट्रे में से कोम अपने हटाया था, कोम हैज टू बी रिपेयर. सो टेकिंग केयर नॉट रीप द बॉटम ऑफ द वेल्स, प्रॉपरली निकालना है. देन द जेल जो था आपने स्टिल इन द प्लास्टिक ट्रे. तो अब यहाँ पे देखो आपने जो भी जेल यहाँ पे पोर किया था, ये स्टील किस में है,
आपके प्लास्टिक ट्रे में। अब ये जो ट्रे है प्लास्टिक ट्रे आपको इंसर्ट किस में करना है, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कास्टिंग ट्रे है इस चेम्बर के अंदर आपको ये अब जेल जो ट्रे है वो क्या करना है यहाँ पे इंसर्ट करना है। So now next one what will be, you have to insert this plastic tray horizontally into the what your electrophoresis chamber and this is to be covered with the buffer। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी बफर सॉल्यूशन आपने यूज किया था जेल प्रिपरेशन में, सपोज यहाँ पे आपने यूज किया होगा TAE, तो सेम बफर सॉल्यूशन आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, पोर करना है। और अब कितना अमाउंट आपको बफर सॉल्यूशन में यहाँ पे ऐड करना है, जब तक आपका ये पूरा जेल का जो पोर्शन है वो कवर नहीं होता है तब तक आपको बफर सॉल्यूशन को उसमें ऐड करना है, सो दैट योर जेल हैज टू बी कंप्लीटली डीप इनटू द बफर सॉल्यूशन। वो प्रॉपर्ली उसमें ये होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली उसमें वेल सेटल होना चाहिए। सो वंस दिस जेल आपने वहां पे डाल दिया, उसमें पोर कर दिया बफर सॉल्यूशन, इनटू द नेक्स्ट स्टेप नाउ यू स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस योर सैंपल इनटू द वेल। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सैंपल विच इज कंटेनिंग डीएनए which is mixed with what your loading die or loading buffer that has to be pipette out। तो आपको सैंपल को यहाँ पे क्या करना है, with the help of the micro pipette you should pipette out that sample and then properly introduce into the wells which is created by the comb। अब इस वेल्स में आपको सैंपल को इंट्रोड्यूस करना है प्रॉपरली एंड देन आफ्टर दैट द लीड जो है ये पावर जो लीड से जहां पर आपके एनोड एंड द कैथोड, तो ये आपका एनोड है ये कैथोड विच इज अटैच विद द पावर लीड, ये से आपको ये क्या करना है, पूरा जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस स्प्रे जो चेम्बर है मतलब जो कास्टिंग ट्रे उसको आपको क्या करना है, लीड से वहां पे उसको क्या करना है, क्लोज करना है। सो द पावर लीड्स आर प्लेस ऑन द apparatus and then finally in the 11th step your current is just supposed to applied। तो फिर यहाँ पे करंट अप्लाई करना है, जैसे आपने करंट को यहाँ पे अप्लाई किया द करंट फ्लो कैन कंफर्म बाय ऑब्जर्विंग द बबल्स कमिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड देन योर डीएनए जो सैंपल जो मॉलिक्यूल है दैट विल माइग्रेट टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे एनोड के पास उनका क्या होगा, फ्लो स्टार्ट होगा, दे रन टुवर्ड्स योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं डीएनए दे आर द नेगेटिव चार्जेस, तो उनका फ्लो कहाँ पर होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली देखना है, जो भी आप यहाँ पे बेल्स और सैंपल इंट्रोड्यूस करते हो वो जो साइड है वो आपके कैथोडिक साइड पे यहाँ पे अटैच होना चाहिए, सो दैट जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया दे आर रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव electrode। ठीक है, so this is all about the migration of the what your charged particle। then after that the distance जो है DNA sample which is migrated in the gel that can be easily visualized by monitoring the migration of the what your tracking dyes। तो हम लोग ने जो ट्रैकिंग डाइज यहाँ पे यूज किया था ब्रोमोफिन और ब्लू और द साइलिन साइलन डाइज से, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, now here I can show you the one small video, throughout that video you can completely visualize the whole process। okay, now you can see, now you can see over here this is the actually your plastic tray, this is the comb। okay, so this comb now you are going to attach with this actually plastic tray properly on one side, then after that you need to add your prepared gel into this plastic tray। okay, so after certain time when it is going to be completely actually solidify you need to remove the what your comb from this plastic tray। so at the same time you need to prepare your sample, so dye added DNA जो sample है वो आपको यहाँ पर लेना है। so with the same time the prepare जो आपका plastic tray जो है जिसमें आपका gel है that has to be inserted into this electrophoresis apparatus tray and then in that you need to add the buffer solution into this actually electrophoresis tank and then properly the prepare sample has to be introduced into the what here
जनरेटेड वेल्स, तो वेल्स में आपको सैंपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है एंड देन लेटर ऑन दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे चेम्बर हैज टू बी कनेक्टेड विद दिस इलेक्ट्रिक पावर सर्किट। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू शुड जस्ट स्टार्ट विद द व्हाट योर स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको करंट को ऑन कर देना है एंड देन योर व्हाट माइग्रेशन जो है आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम विद द हेल्प ऑफ द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन के साथ आप क्या कर सकते हो, यू कैन विजुअली विजुअलाइज योर ऑल द मार्कर्स। तो यहाँ पे आप डीएनए की जो भी लैडर्स है वो आप यहाँ पे प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन use this agrogel electrophoresis separation technique to separate out the what your DNA, RNA and the protein molecules. ठीक है, so I hope so from this video you can completely means visualize कि हमें exactly procedure में क्या करना है। ठीक है, completion of the your electrophoresis part, the next part will be you have to observe the DNA. So once you see the migration of the blue color DNA sample in the gel, switch off the power supply immediately and then remove the gel and place it in the ethidium bromide solution so that you can visualize all the DNA ladders properly. And the last step over here is the expose under UV light. So expose the ethidium bromide stain gel under the UV light and take a picture. So the DNA bands appear in the lane of respective well. Also the DNA ladder is going to visible with the help of this ethidium bromide. So therefore the length of the DNA bands can be easily determined. So you can see now from this picture clearly that how this can be looking at clearly. So this is actually one of the images which I can take from the one of the article, that this is the actually image of the agrogel electrophoresis separation of the sample TGF beta 1 gene of the DM patients. So the bands were fractionated by the electrophoresis technique. यहाँ पे उन्होंने 2% agrogel यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो 80 वोल्ट पर सेंटीमीटर और विजुअलाइजेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे स्टेनिंग दिया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, सो दिस इज यू कैन सी नाउ लेन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so these are the lane and you can see how wonderfully 100 bp to 3000 bp, this is the actually what your DNA ladder and you can see how they are visualized properly from this actually lane 1 to 9. So this is how agrogel electrophoresis really very helpful to use separation of the what your DNA, RNA and protein kind of the macromolecules properly. So now with this, after finish with the analysis part, the next part, what are the advantages of this agrogel electrophoresis? So the main advantages of this technique will be the gel is easily poured and doesn't denature the sample. This is the really very most important advantages of this technique. Okay. Second, but most of the application only a single component approach is needed and no polymerization catalysts are required. So therefore agrogel are very simple and rapid to prepare. तो यहाँ पे पूरे कंपोनेंट में हमें एक ही एग्रोज यूज करना है, कुछ और मटेरियल नहीं यूज करना है. So that's why this process are really very simple. And the last one, the samples can be easily recovered. So this is all about the advantages of this gel electrophoresis technique. But कुछ disadvantages भी है. So just let us talk about now disadvantages. So disadvantage यहाँ पर ये the buffer can be becomes exhausted. तो जो भी हम लोगों ने बफर बना है that become exhausted. Next disadvantages टेक्निक का ये है the gels can melt during the electrophoresis. तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम लोगों ने जेल बनाया उसका जो भी कंपोजिशन है कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द एक्चुअली एक्सपेरिमेंट शुड बी वन, तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए. बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर बिकॉज ऑफ द एक्चुअली टेम्परेचर अगर हम लोगों ने प्रॉपर्ली वहाँ पे मेंटेन नहीं किया, सो देयर में भी पॉसिबिलिटी टू जेल हैज टू बी मेल्ट. तो वो हमें एक डिसएडवांटेजेस टेक्निक का यहाँ पर है जो हमें प्रॉपर्ली टेक केयर करना है उसका. एंड देन लास्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है दैट different forms of genetic material may run unpredictable form. So with these actually few notes of the advantages and disadvantages, we run towards last part of this agrogel electrophoresis, which is nothing but the application. तो application मैंने आपको already बताया है कि एक बहुत important separation process है methodology जिसमें हम लोग separation जो होता है macromolecules का उसे करने के लिए परफॉर्म करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें साइज डीएनए मॉलिक्यूल का जानना है तो भी हम लोग एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्जांपल लाइक इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक डायग्नोसिस और द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, इसमें भी ये मेथोडोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं. देन सेपरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए prior to southern analysis और RNA prior to northern analysis. तो जो हमारा साउथर्न और नॉर्थर्न जो एनालिसिस जो पार्ट है उसमें भी हम लोग ये वाला जो मेथोडोलॉजी वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो विद दिस एक्चुअली
फ्यू एप्लीकेशन पार्ट जो है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये टेक्निक स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एग्लोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यू कैन इजीली अप्लाइड ऑल दिस एप्लीकेशन करेक्टली एंड प्रॉपरली, और इसका रिजल्ट आप प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हो. So once again student, thank you so much watching this video, and if you really like this video, so don't forget to subscribe us. And one more thing, if you have any doubt regarding this actually concept, so you can definitely ask me the question, so I definitely resolve your all the problems. So once again student, thank you so much. So stay tuned with us, keep learning and keep smiling. Thank you. Like a Hellcat.